part of chapter 8, cell organelles. Lastly, the types of cell organelles. It's including all plants, cells and euglenoids. And plastic divided into three parts: chloroplast, leucoplast and chromoplast. Chloroplast, further, it's containing green pigment, leucoplast containing colorless pigment, and chromoplast red, yellow, orange pigment. Red particles present inside the cells. And chloroplast further divided into six parts. First, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, and chlorophyll E. In form of chlorophyll, it's a 5 types, but other helping pigments is known as carotenoids. Chlorophyll A and B most effective and mostly active in photosynthetic pigment on all terrestrial plants or leaf. And chlorophyll C, it's less effective and it's found in aquatic plants like algae and bacterial cells and bryophytes. Bacterial cells like a cyanobacteria, blue-green algae. And D and E, chlorophyll D and E, it's totally inactive. And carotenoids further divided into two parts: carotene and xanthophyll. Carotene mostly found in carrot, it's orange in color, and xanthophyll yellow color pigments. इस कैरोटीन एंड xanthophyll के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट, वो प्रैक्टिकल में हम स्टडी करेंगे. उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आइसोलेट इन अ बोल्ट्जमैन पेपर. एंड द ल्यूकोप्लास्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड लिपिडोप्लास्ट. एमाइलो जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका वर्क भी है. Amyloplast means storage inside the carbohydrate. Like some examples: maize, rice, wheat and potato. All type of seeds containing carbohydrate inside for energy production. And proteinoplasts are also known as neuronoplast, stored in protein inside and mostly pulses including in proteinoplast seeds. And lipidoplasts are a alveoplast, stored fat inside the seed and mostly seed like a mustard, groundnut, sunflower, coconut, etc. Stored जिसमें आयली कंटेंट होते हैं वो सारे सीड्स लिपिडोप्लास्ट में इंक्लूड होते हैं. एंड मेन वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द इंटरनल स्ट्रक्चर. स्टडी हियर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Firstly, the TS section of leaf. You know TS section of leaf. The upper layer of the leaf is single layer in structure is known as cuticle. Cuticle, it's a protective layer, and inside the cuticle, single layered structure is known as epidermis. Epidermis, and below the epidermis, it's a pillar-like elongated cells. It's known as palisade cells. Palisade cells. And palisade cells containing chloroplast. Inside the palisade cells, granular structure like this, and granules, it's a chloroplast. And below the palisade cells, it's a rounded structure, oval-shaped structure. It's a site of vascular bundle. Inside the xylem and phloem. Xylem and phloem. It's a main role for transportation of food and minerals inside. And below the vascular bundle, like a rounded structure, is known as spongy cells. Spongy cells. So palisade cells and spongy cells, including this region, is known as mesophyll region. Mesophyll cells. And lower part, it's a lower epidermis. And below the lower spongy cells is stomatocyte. In monocot leaves, mostly stomata found in equal
both region, upper and lower region. 172 stomata found in onion leaf, and in case of dicot leaf, upper surface less stomata containing site and lower maximum. But comparison to monocot, it's a less in numbers in dicot leaf. And तो साइट डिसाइड हो गया, मीन्स तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मीसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं लीफ के मिडिल रीजन में. और इसको और हम हाईलाइट करते हैं. तो ये स्टोमेटा को अभी हम आगे स्टडी करेंगे. लेंटिसल्स के साथ स्टोमेटा से एंट्री होती है CO2 की इन एट डे टाइम and release O2 outside at daytime. It means CO2 involved in photosynthesis and release oxygen at daytime, but at night involve O2 for respiration and release CO2 outside. And the other internal structure of chloroplast is here. It's a double layered structure, outer layer and inner layer. First question originated at this site means double layered organelles कौन से हैं. तो most important double layer organelles is mitochondria and chloroplast. It's both organelles is most important for examination purpose. And inside the liquid filled region is known as stroma or matrix, and the finger like projection, it's a oval shape like a coin arranged in a linear way. 1 rupee coin or 2 rupee coin arranged in a linear way. It's form a pillar, and the one pillar connected with the other pillar, the pillar is known as granum, and one coin of the pillar is known as grana, and the single grana, it's also known as single lamellae or a thylakoid. And inside the thylakoid, the internal structure of the thylakoid, oval shaped structure, and like this. Like this. And the inside the thylakoid, 8 to, it's containing 8 to 10 quantasomes. And quantasomes, one quantasomes containing, inside the quantasomes, it's containing 250 to 300 chlorophyll pigments, particles. You know, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं? लाइक का सिंदूर की डिब्बी देखा है, उसके उस फर्स्ट लेयर को जो हटाते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर, वो है वो थैलाकोइड की अपर मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है रेड कलर के सिंदूर के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पार्टिकल्स. ये होते हैं क्वांटासोम्स में, मीन्स द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वांटासोम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, द granum, like here, granum, it's a site of light reaction center, and light reaction at the daytime, photosynthesis form at this site, and the at night means dark reaction center in stroma, means liquid filled region जो है वहां पर डार्क रिएक्शन होता है, और जहां पर ग्रेनम होते हैं वहां पर लाइट रिएक्शन होता है. लाइट रिएक्शन डे टाइम में होता है, और यहाँ पर वाटर इन्वॉल्व होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं डे टाइम. और वो डे टाइम में जो रिलीज करते हैं वो नाइट में इन्वॉल्व हो जाता है डार्क रिएक्शन में. डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, एंड कैल्विन साइकिल से फिर NADP
प्रोड्यूस होता है और NADP रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म में NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Most important, expand the term NADP and the other term ATP. You know ATP. ATP is the full form of NADP and full form of ATP is adenosine triphosphate. Both terms, it's most important for examination purpose. Understand? That's it.